It seems like bulls are back in action. Bitcoin is again above $24.5K. Ethereum is above $1,800. Is it means like क्या जो भी predictions था मतलब कुछ दिन पहले तक चार्ट का जो पैटर्न्स था जो भी prediction था कि they might Ethereum and Bitcoin both might retest its own recent lows. क्या ये गलत है या फिर still there is a huge chances left? शायद ये बस एक bull trap है, ये fake out है या एक legitimate bump है. What the heck is this? So whatever it is, we are going to see in this video in our technical parts. But before that, let me tell you, we have a very similar situation. Like कुछ सालों पहले हम लोगों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आप लोगों के जेब में पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है. आपने क्या बोला था? हाँ. ऐसे सेम सिचुएशन में मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बोला है कि लास्ट मंथ को इन्फ्लेशन रेट तो 0 था. So we should not be blaming Mr. Biden because उसका काम ही है बातें करना. किसी ने भी नहीं बोला है कि उसमें लॉजिक होना चाहिए. When the whole US and United Nation and European committees they all are telling कि inflation is getting worse and worse. Mr. President is openly on an open mic. He is telling last month को जुलाई पे the inflation rate was 0. किसी ने बहुत अच्छा एक ट्वीट किया है. Since he is a president, ask him कितना बार he bought food for himself. How many times he refilled the gas from a gas pump? कितना बार बाहर गया है कुछ खरीदने के लिए? क्योंकि सब कुछ इन लोगों को फ्री में मिलता है. That is why they are far away from this realization कि how all the normal people, how all the civilians are surviving. Some economists they are claiming कि mostly inflation rate is over 15%. जहां पे दे आर असेसिंग क्योंकि इन्फ्लेशन रेट मतलब लास्ट ईयर को आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते थे आज कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो उससे उसका माइनस करके परसेंटेज निकालना होता है. सेम वे लास्ट ईयर गैस का प्राइस क्या था मतलब इंडिया का बात कर रहा हूँ जो खाना पकाने का गैस है. लास्ट ईयर अपने गैस कितना पैसों में खरीदे थे एंड इस ईयर कितना पैसों से खरीद रहे हो. So that's what shows inflation. So some realistic economists, they are actually assessing, they are actually telling inflation rate must be above 15% when Biden is shamelessly announcing that inflation rate is 0. So anyways, market is showing some significant bullish and positive sentiment everywhere in spite of this recent Taiwan and China conflict, international chip shortages. Recently, Sri Lanka's Hambantota port is being tricked by Chinese president and the Chinese economy. तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी market is showing some significant bumps. Is this suspicious? Definitely. As a economist, as a investor, you should always smell the odds and even of this market. क्योंकि market makers they are sitting and they are just trying to trick you, trying to fool you every single hour, every single candlestick. So be very cautious. Wait for the next part of this video जहाँ पे मैं ये दिखाने वाला हूँ कि how the chart is shaping and how bullish or how bearish is this. Before I go forward, this is Dave. Welcome back to Bitbull. Hope you all are doing well and good. So make sure you're liking this video, subscribing this channel for showing support. Share this video if you feel like you are getting some value out of all these updates. Be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the good chart news, good trade updates on time whenever we need. जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. Just go down below and feel the joy of success. So let's get forward. Before I move to the chart story, I have two more news to share with you. So bear with me. First news is some genius is making Bitcoin accessible for each and every one on this earth. चाहे आपके फोन पे इंटरनेट है, चाहे आप जहाँ पे रहते हो उधर इंटरनेट है, चाहे आपके पास एक स्मार्टफोन है या नहीं है, you will still can be access to the Bitcoin network. A guy from Africa, he's actually researching on sending and receiving bitcoins via SMS, जो कि हम ऑफलाइन भेजते अपने दोस्त को, जिसके लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी इंटरनेट नहीं चाहिए.
You just need to have some certain balance on your phone. You just need to have some certain network on your phone, and you are good to go for receiving and sending Bitcoin. So what happens? Africa, may we know it's still a underdeveloping country. Like many places in Africa are still below poverty line. Like जहाँ पे hardly there is electricity, so how can you expect there will be some network or there will be someone who is developing network for the poor? तो he is developing a messaging system जिसके चलते आपके पास कोई भी फोन हो, doesn't matter, it is a smartphone, ultra smartphone, 5G, 10G, कोई भी फोन हो, you can still send and receive Bitcoin. तो जिसके चलते Bitcoin का जो adaptation rate वो quadruple होने वाला है अगर ये successful हुआ. तो so far ये already on air है ये वाला system, and very less like above 200 people are using, and it is showing some positive result. It's just a matter of time if we know the size of Africa. If the entire Africa started using the system, it will be a huge gain for Bitcoin. So Africa को देख के और भी बहुत सारे countries like Africa, they will come forward and they will actually adopt this system. We know that Bitcoin is for everyone, and so far जो भी countries, मतलब जितना भी poor countries है, they are actually adopting Bitcoin like the creator. क्योंकि जहां पे आज तक ये सब कंट्रीज को कोई भी कंट्री हेल्प नहीं किया है, ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई बिग इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जहां से पैसा लेंड करता है कंट्रीज, ये सारे के सारे जगह जब फेल हो चुका है, देन दे फाउंड बिटकॉइन एज अ मीडिया ऑफ न्यू होप. So we know अगर ये सब experiment successful हुआ, then definitely this will leave a huge positive effect on Bitcoin adaptation. And second, from Coinbase corner, Coinbase is actually mocking the SEC. Actually बोलते हैं कि मीठे बातों में थप्पड़. Coinbase is showing the same attitude towards SEC. क्योंकि SEC has been like last 2-3 months they are like keep investigating, they are like keep putting some allegation. Like last महीने को क्या हुआ था? It was like SEC was alleged. It is still not proven. So SEC was actually spreading कि there is a case of insider trading कि Coinbase का एक product manager, he was transferring the news or some insider news to his brother and friends to make money. मतलब कुछ coin list हो रहा है, उससे पहले बोल रहा है तो आप भाई पैसा लगाओ, 2-3 घंटे के बाद आप उठा लेना क्योंकि जो धमाका होना है नेक्स्ट 2-3 घंटे में ही होना है. जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं वैसे. मतलब सोच लीजिए किसी एक्सचेंज को अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हो, वो सारे के सारे एक्सचेंज एवरी टाइम जब भी कोई कॉइन या फिर कोई नया कुछ लिस्टिंग होता है, वो लोग ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर हैंडल पे अपडेट करता है कि 12 PM IST, 12 PM PST से ये स्टार्ट होगा, ये इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा. दैट्स हाउ. तो ये लोग बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था बिफोर इवन दे पोस्ट इट इन सम सोशल मीडिया, दैट पर्सन, दैट प्रोडक्ट मैनेजर वाज एक्चुअली शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन टू हिज ब्रदर एंड हिज friends, जो कि still completely unproven है. Now the recent allegation on Coinbase is against their staking and listing. Like since Coinbase is a Nasdaq listed company, तो जो भी listing होता है या फिर जो भी asset है, वो सब कुछ SEC को बताना पड़ता है. So now they're actually telling कि Coinbase में ऐसे बहुत सारे शायद maybe coins होगा जिसके बारे में SEC को पता नहीं है. एंड साथ ही साथ कुछ coins का जो staking process है, आपको stake करके जो 5%, 10%, 15% इंटरेस्ट मिलता है, तो वही स्टेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी ये लोग इन्वेस्टिगेशन मतलब सवाल करना चाहता है. बट Coinbase इज एक्चुअली टेलिंग दिस सवाल जवाब मे बी इट इज नॉट अ सवाल जवाब, इट विल बी अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन जिसका कोई भी परमिशन SEC के पास नहीं है. तो एनीवेज, कांग्रेस एंड द रेगुलेटर्स they are actually harassing some institution in terms of legalizing this process, which is actually very disturbing for all those who are actually involved in this process. क्योंकि हम लोगों को भी पता है जब कोई बाइक पकड़ता है तो जब डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो ऐसे मांगता है like it is not your bike or it is not your car, you have stolen it from somewhere and you are just doing some illegal shit or you are just trespassing something. So that is how SEC is behaving towards some companies, especially on Coinbase, since it's already listed in Nasdaq. So that is why Coinbase is telling कि ये सब कुछ सवाल जवाब नहीं,
एक इन्वेस्टिगेशन है which is actually taking a toll on their health and their company reputation, क्योंकि इस क्वार्टर में Coinbase has already lost 64%. 64% लॉस नहीं बोलूंगा, 64% लेस इनकम हुआ है। लास्ट ईयर इस सेम क्वार्टर में 1.64 बिलियन डॉलर का इनकम हुआ था। दिस ईयर सेम क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में Coinbase का 1.1 बिलियन का लॉस हुआ है। सो ये सब के चलते Coinbase का जो रेपुटेशन है वो डाउन हो रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। So that's it from my side, guys. जो technical story है, I'm going to post in my next video, particularly because I want to discuss that technical part thoroughly. So see you soon. Till then, take care. Dave signing off.